Sir, but you've mentioned something which brings a you mentioned एक जो I call them पाकिस्तान की जो तीन लाइफलाइन थी सर, and दो तीन लाइफलाइंस आई पाकिस्तान के पास. One was of course the Soviet invasion of Afghanistan. There is no question. Iranian revolution आपने बताया, so these are two lifelines. And the third one was of course 9/11. No, You know no, they no, 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 no. 9/11 was too late. 9/11 no happened 22 in years their before. I mean I call them their economic lifelines, sir. Okay, They yeah, got yeah. Okay, huge economic boost during that take time, it, sir. take it, take it. हाँ जी. Absolutely. Now जो इस्लामिज्म का एडवेंट विद इन पाकिस्तान, दी स्प्रेड ऑफ इस्लामिज्म सर, एक छोटा सा सवाल है बिफोर आई एक्चुअली गेट इनटू अ स्लाइट कंपैरिजन, कि ये वुड यू बिलीव कि ये पाकिस्तान के ऊपर फेंका गया एंड इट गॉट स्प्रेड, और पाकिस्तान अडॉप्टेड इट? बड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल है. But I think the answer is a combination of both things which you say. देखिए, जब सोवियत इन्वेजन हुआ तो पैनिक स्टेशंस में थे. अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों के दोनों, they were both interested in immediately having some way by which to stop the Soviets getting into Afghanistan. Yeah. And Pakistan was the frontline state. पैसा बेशुमार भेजा, हथियार बेशुमार भेजे, मर्सनरीज, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से मर्सनरीज आए, उनको भेजा, ह्यूमन रिसोर्सेज वहां बने, तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई. अब ये जो फ्रॉम 1980-81 टिल से अबाउट 1989, ये 8 साल जो थे बड़े क्रूशियल ईयर्स थे. इन क्रूशियल ईयर्स के अंदर भारत के अंदर अगर आप देखें तो खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था, पंजाब में भी काफी उस वक्त टर्बुलेंस थी, और अफगानिस्तान में टर्बुलेंस थी. बीच में अफगानिस्तान पाकिस्तान था जिसकी अहमियत बहुत ज्यादा बेशुमार ऊपर पहुंच अंदर पाकिस्तान कंट्रोल. एंड यू फाउंड जिया. दिस इज अ टाइम एक्चुअली यू गो बैक टू जिया थिंकिंग. ही इज द वन हु रियलाइज्ड व्हाट प्रोबेबली दे वर डूइंग इन अफगानिस्तान. वही चीज जो है उसको कश्मीर में भी कर सकते हैं, हटकर कश्मीर में भी कर सकते हैं. Which is actually a very natural corollary, because you see how effectively the Soviets were countered in Afghanistan through international mercenaries, Islamic mercenaries coming in, support coming in from Saudi Arabia, support coming in from America. And ये idea इनके ऊपर, इनके दिमाग में बैठा हुआ था कि भाई इसी चीज को स्विच करके कश्मीर में करें. उसको करने के लिए you need to keep the Islamist line intact. Which means कि देखिए, मिडिल ईस्ट से जहां से भी आपके कॉन्टैक्ट्स है वहां से लेकर और इनटू पाकिस्तान एंड इनटू जम्मू एंड कश्मीर, दिस लाइन मस्ट बी इंटैक्ट. विच इज व्हाई आई ऑलवेज से कि देखिए, ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ 19 जनवरी को was an event which was supposed to be a milestone to show within the radical community कि see, we can do this kind of a thing, eliminate a whole faith from a certain area and get the people on our side there. पाकिस्तान का रवैया जो है from 47 has always been कि किसी ना किसी तरह से लोगों को, आवाम को, जनता को भड़का के अपने तरफ लो. 47-48 में भी कोशिश की, they couldn't succeed. 65 में जिब्राल्टर में भी उनकी कोशिश यही थी, मगर they could not succeed. 1989 में जब शुरू किया तो yes, they did succeed in getting the movement going completely, but then we diluted it over a period of time. ठीक है, मगर जो essential basic theme है, which is the glue which combines, gets them all together, is Islamism. वो they decided not to dilute it or leave it until it started striking them back within Pakistan. वो हिलरी क्लिंटन वाला फेमस स्टेटमेंट वो उनके ऊपर आने लगा. किस हद तक पाकिस्तान आर्मी ने, किस हद तक पाकिस्तान ने खुद कोशिश की है against Islamism to counter it, that is a debatable issue. I find some very interesting articles on Jinnah Institute के वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखें, बाकी इधर उधर देखें, तो lots of things about counter radicalization in Pakistan and things like that. मगर इसका असर जो है मेरे ख्याल में very very marginal, a drop in the ocean. इतनी हद तक ये कट्टरपंथी बढ़ गई है, this radicalism has gone up, that this basic belief जो दिमाग में है पाकिस्तान के strategic thinking में कि इसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन, वो thought process नहीं जा रहा है, वो mindset बना हुआ है
including after the death of 139 children in the army public school in Peshawar. मैं समझता था कि ये एक इवेंट है which will change the mindset of the Pakistan army. उसने भी नहीं बदला. तो अब आप समझ सकते हैं कि कट्टरपंथी कितनी हद तक पाकिस्तान आर्मी के अंदर बसी हुई है. मैं आपसे इसके बारे में सर इसको एक जरा पिन लगा के बोर्ड पे लगाते हैं, बिकॉज आई वांट टू आस्क यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान की है. आजकल मैं काफ़ी इसके बारे में फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आई फाइंड कि ये बड़ा क्रूशल टाइम है पाकिस्तान के लिए, बिकॉज इट इज either this way or that way. There's not going to be a center part Pakistan for a long time. At least at the moment, I believe so. I may change my beliefs as time go by because चीजें बदलती रहती हैं. But sir, मेरे को आपसे एक जो सवाल पूछना है is about the factor that Islam has been the base of the creation of states in the Arab world also. आप देखिए बहरीन है, कतार है, UAE is there, you've got Saudi Arabia. Whatever said and done, sir, they've got very, very strong version of Islam, if I may. But they've been also able to develop their basic industry, बहुत जबरदस्त. infrastructure, healthcare. They've been able to do that. वो अगर वहां पर कर सकते थे जहां पर radicalization भी है सर. सऊदी में तो the 9/11 bombers, I mean, most of them were Saudis at the end of it. So there's heavy amount of radicalization there as well. But they were able to do it. ये पाकिस्तान क्यों नहीं कर पाया सर? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस पर मैं थोड़ा वक्त लगाता हूं. हाँ जी. देखिए दोनों तरफ पाकिस्तान भारत के सब कॉन्टिनेंट का एरिया एंड द मिडिल ईस्ट बोथ वेयर अंडर द थ्रोज ऑफ colonialism. एक वक्त वहां से निकले. इनफैक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारत और पाकिस्तान तो दोनों पार्टीशन के वक्त 47 में ही फ्री हो गए थे. ये देश जो है ये बाद में हुए, थोड़े बाद में हुए, प्रोग्रेसिवली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. Until my theory is till the 70s things were still shaping up. अगर 70s में ये एनर्जी रेवोल्यूशन नहीं होता 73 की लड़ाई के बाद, स्पेशली 73 की योम किपुर वॉर जो थी बिटवीन इजराइल एंड इजिप्ट एंड इजराइल एंड सीरिया, उसके वजह से प्राइस राइज शुरू हुआ एनर्जी का. द पेट्रो डॉलर स्टार्टेड फ्रॉम देयर. The riches coming into the hands of the sheikdoms and of the Gulf also came in from there. तो जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, यही बहरीन, यही मस्कत ओमान, all these could have gone the way that Pakistan has gone. They could have all gone that way. But यहाँ एकदम से एक पैसा आया. दूसरा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस दोनों जगह पर थी. अगर आप देखें तो अमेरिका की इंटरेस्ट पाकिस्तान में भी थे, अमेरिका की इंटरेस्ट यहाँ पर भी थे. America को Pakistan could not take it on board to carry out its development. It only used America for its securitization, not for its overall futuristic economic development, a futuristic look and things like that. सिर्फ अपने essentially F-16 खरीदना, ठीक है, $3.2 billion की हथियार खरीदना, if you remember in 1989. ये इनकी रिलेशनशिप रही यूनाइटेड स्टेट्स के साथ. मिडिल ईस्ट में इट वाज बोथ थिंग्स. इजिप्ट में हैव गॉट वेपन्स फ्रॉम रशिया. सम of these countries like Kuwait, etc., also got a lot of weapons from America. But these remained as interests of the United States. In conjunction with the United States, they developed their economies. And trade, commerce, energy became main issues. Once that happened, the quality of life enhanced. When the quality of life enhances, automatically you find that securitization then takes a slight back step. ये पाकिस्तान में नहीं हो पाया. सॉरी, ये यहीं पर हुआ. अगर हम मस्कत जाइए, ओमान जाइए, I mean the kind of development you find the quality of life people are leading. कुवैत के अंदर देखिए, गल्फ के अंदर बाकी कंट्रीज, दुबई, यूएई, कहीं भी जाइए आप, naturally when you attained a certain quality of life, you don't want to start compromising on that by promoting ideologies. अगर आप देखें तो small things, liquor is permitted in most of these countries in hotels. It will not be served in gatherings and things like that. ठीक है.
Foreigners आते हैं, वहां रहते हैं, foreigner is comfortable, he can drink whatever he wants, whatever, go wherever he wants, etc. So there's a culture of freedom which kind of exists there. Overall high quality of life, जो 8.2 million Muslims Indians है मिडिल ईस्ट में, क्यों है वहां पर? एक तो पैसा उनको मिलता है which they're sending home out here. At the same time, they're happy, they're also leading a fairly comfortable life. बहुत अच्छा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है. There are rules, regulations and laws which everyone is following. So I think when a balance exists between development, welfare, when the welfare state, the whole concept of the welfare state comes in, development साथ में हो रहा है, the state is concerned about the people itself, and the security does not mean military security. Security also means human security. It also means economic security. It also means energy security. Security for Pakistan means only one thing, and that is military security. हथियार, मतलब AK-47 is the only symbol of security. The symbol of security is a dollar note, I would say, in the Middle East. So this is the reason why the Middle East has been able to, or the Gulf countries in particular, have been able to live with both worlds, right? And the Saudi Arabia, we've seen over a period of time, and now under Mohammed bin Salman, Prince Mohammed bin Salman, you're seeing the kind of strides it is making, attempting to, get rid of his past, etc., which will happen over a period of time. Mohammed bin Salman has very clearly said by 2032, he hopes to be able to get Saudi Arabia to a situation where it's no longer dependent entirely on energy for its economics, for his economy. It's going to be essentially a trading country, also a manufacturing country, and things like that. ये ख्यालात, ये थॉट प्रोसेस जो है, ये कभी पाकिस्तान में क्यों नहीं आए? ये हम सवाल पूछते हैं अपने आप. This is because when you go over the history of Pakistan, you realize that एक तो उनकी बड़ी कमजोर ब्यूरोक्रेसी थी शुरू में, ठीक है. They've had an excellent foreign service. पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त थी. इनके जो डिप्लोमेट्स थे बहुत ही अच्छे थे, अभी भी अच्छे हैं. ब्यूरोक्रेसी somehow इनकी जो थी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, the chunk of the good bureaucracy all came to India. I think most of the weaker part of the bureaucracy went to Pakistan. They couldn't really get their act together. And that is one of the reasons why you find. अब बाकी चीजें अगर आप देखें तो the famous example of क्या है उनका नाम, आतिफ मियाँ जो हैं, who was the advisor to Imran Khan, economic advisor, and remained for about 6 or 8 weeks, and world-renowned economist, which they had harnessed his services to come and advise Pakistan on this. And when it was discovered that he's a Qadiani, or what is called an Ahmadiyya, he was thrown out. अगर आप इस तरह की चीजों के ऊपर जाएंगे, then naturally how are you going to be respected, and how will you look after the interest of your people?